इसकी भी कोई बेसिस होंगी, इसके कोई दो एक्सेस होंगे प्लेन का हर पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो एक्सेस चाहिए, प्लेन का एक्स एक्सिस या प्लेन का वाई एक्सिस. या लेट मी कॉल प्लेन axis as, let's say this is V1, the first axis of the plane, and let's say this is V2, the second axis of the plane, which means all the points in this plane can be represented by just using these two axes. Obviously, if it is a two-dimensional subspace, only two axes are required. Let's say these are the two axes, and for simplicity, I'm assuming the two axes are orthogonal. ठीक है? एक चीज जरूर ध्यान में रखें, this V1, which is the direction vector, it has three numbers. Because V1, it is in the 3D. To locate V1, we need three numbers. Similarly, V2 has three numbers. Because V2 is a vector in 3D. To locate V2, we need three numbers. We need the original three axes. Make sense? Makes sense. But once V1 and V2 are found as three numbers, let's say given, each of these points can be represented by just two coordinates. V1 coordinate, V2 coordinate. Any question, Project. Yes, no. And the V1 coordinate for this point can be found very easily. Project. Let's say this point is xi. So this is the V1 coordinate, let me call it alpha. This is V2 coordinate, let me call it alpha. Yes? So alpha 1 of point I is actually equal to V1 transpose xi. So far so good? So you characteristic तीन original feature space 3 dimension. अब तो जब डेटा अंदर V1 है, V2 है, V3 है जो तीसरी हमारी बेस हो. ओ एक्चुअली पूरा डेटा एक प्लेन में लगेगा पहले, तो प्लेन की सिर्फ दो डायमेंशंस हैं. तो हम तीसरी डायमेंशन से डील क्यों कर रहे हैं? तीसरी डायमेंशन ओरिजिनल डेटा हमने लिया था वो 3 डायमेंशनल था. अच्छा. ओरिजिनल एक्सेस जो थे वो 3 ही थे. लेकिन it just turns out कि सारा डेटा 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Why we are using third coordinate? लेकिन वो दो जो बेसिस हैं वो दो स्टैंडर्ड बेसिस में से कोई दो नहीं है, कोई और बेसिस है. और लेट्स से वो गिवन है, अभी बाद में हमें गिवन भी नहीं है, फाइंड आउट करेंगे. लेट्स से अगर वो गिवन है तो डेटा रिप्रेजेंट कैसे करता है अगर वो गिवन हो तो इस तरह हमें वो तीन जो डेटा 3 डायमेंशन है उसको दो डायमेंशन है. यस सर ये इस तरह हमें मिलेगा डेटा जो 2 डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंट हो रही है. I will show you that in most of the applications the data has this kind of structure. Make sense? और एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. Just again the example from computer vision. Let's say you have a face image, and the face image is let's say 100 by 100. That's a face image. Yes? Make sense? You linearize this and it becomes a vector of this by 1. Yes? Let's say you have a lot of faces. Make sense? So each face is a point in this particular case, each face is a point in 10,000 dimensional space. It's a point there. Make sense? That means there is a 10,000 dimensional space in which face is just a point. Make sense? Now you come up with a lot of faces. All are human faces. There will be points in 10,000 dimensional space. Yes? But in this 100 by 100 image, you could have a tree. You could have a duck. You could have a... Make sense? Now all the images, 100 by 100 images, all 100 by 100 images of tree, they are also points in the same space. All ducks, they are also points. Actually, every 100 by 100 image is a point in that space. Make sense? But because these faces, they have so similar structure, that face points, they will lie in a subspace in that 10,000 dimensional space. It is very, it is very unintuitive to think कि इस 10,000 dimensional space में जो face points हैं, they are scattered everywhere. They are not. They will be very compact and make a subspace. Make sense? Similarly, the trees, all the trees, they will make their subspace, and
and so on. So the actual data will lie in a very less dimensional space. The hard way is to find out the basis of that subspace in which the data can be represented with much lesser number of coordinates, without the loss of any information. If this structure is not in the data, then this routine will not work. Yes. But mostly this structure is there in the data. If the structure is there in the data, you can exploit this. ये बात तो समझ आ गई है, जैसे हमने अभी आपको 3D वाली स्पेस की एग्जांपल दी, इसमें पॉइंट्स से 2D के, so we can simply know the third point because we can simply reduce the third dimension. नहीं ना, हम दोनों की बेस के ऊपर डिस्प्ले हमारे पास once B1 आ गया हुआ है, तो इसका मतलब है B2 का भी जो है Z पॉइंट वही होगा, ठीक है? नहीं, कैसे मेरे कहने का मतलब अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है x1 x2 x3, B1 मेरे पास पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, तो B1 डायरेक्शन में मैंने फाइंड आउट कर दिया। B1 का x3 और B2 का x3 सेम होगा, B1 का x3 एंड B2 का x3 सेम होगा, क्यों? सेम प्लेन पे है ना, सिर्फ प्लेन पे नहीं, प्लेन ऐसा हो सकता है ना, प्लेन यूं हो सकता है इन ना, दोनों का एक जो इनका x है तो सेम होगा ना, नहीं, नो। वो अगर ऑर्थोगोनल होगा तो फिर बात कर सकती है। हाँ, ऑर्थोगोनल लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड प्लेन्स के पैरेलल है, स्टैंडर्ड प्लेन्स कौन से हैं? XY प्लेन, XZ प्लेन, YZ प्लेन। अगर प्लेन इनके पैरेलल है, ठीक है, तो फिर कोई एक कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। नहीं तुम एक The plane can rotate everywhere. हाँ रोटेट कर भी ले तो तुम ये कह रहे हो कि एक लाइन है वो हमेशा एक लाइन जो अब लाइन प्लेन का सिंगल वो है ना, तो तुम कह रहे हो कि इसमें कभी भी x चेंज होगा y चेंज नहीं होगा, या y चेंज होगा x चेंज नहीं होगा, ठीक है बात। Let me explain this through this example. 4, 9, 2, 1, 0, -1. इन 3 पॉइंट्स से मैं एक प्लेन बना सकता हूँ। यस इन 3 के कोई कोऑर्डिनेट्स बताए मुझे नहीं। वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्लेन बन सकता है। Yes. So if the plane is parallel to the standardized planes, then you have one coordinate fixed. और by the way, अगर वो origin से pass नहीं कर रहा होगा तो subspace भी नहीं है. It should be the XY plane. It is not just parallel. It should be XY plane. It should be YZ plane, or it should. Otherwise, the plane must pass through origin to make to be a subspace, and then it can be in any orientation, which means the 3 points they do not have one coordinate always common and stuff. They may change every 3 times change. ठीक है? Okay. So if this kind of structure, the subspace structure, is there in the data, you can exploit that structure by finding out the appropriate less number of bases in which the data completely resides in, and the total number of bases are no longer 10,000 for the previous example. In that case, you compress the data a lot if the data has that kind of particulars. बेसिस को हर पॉइंट से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स। Basis की coordinates आ जाएंगे, representations आ जाएंगी। नहीं तो वो ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स ही है ना, Yes, ट्रांसफॉर्मेशन points करती है, transform और फिर उससे हम कहीं करेंगे और टेस्ट डेटा जो आएगा उसको भी से बेसिस से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आपका मकसद क्लासिफिकेशन है, अगर आपका मकसद डेटा को कंप्रेस करके रखना है और बाद में ओरिजिनल डेटा बैक कर रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। यस, ओरिजिनल कैसे वो कैसे करेंगे? जी मैं आपको आने चलने तो देंगे। ओके, इज दैट ओके? यस। And then we have alpha 2i, which is B2 transpose xi. Make sense? This is a real number, this is a real number. Now, the original xi was having 3 numbers, which now transform to just 2 numbers, alpha 1i, alpha 2i. Make sense? But we can always get our xi back using the following way. If I want to reach this location with respect to these axes, all I need to know is the following. If I am in this plane, then walk alpha 1 steps in direction of B, alpha 1i in the direction of B1, and then my unit had to give you alpha 2i in the direction of B2, and that is exactly xi. याद रखें, आपने बेसिस फेंके नहीं। यस। जो बेसिस हैं वो फेंके, बेसिस फेंकते नहीं, फिर नहीं वापस आ सकते। The bases are there. You can go from that basis to there using dot products, and you can come back using the linear combination. Yes, no. यस। Make sense? नो सर,
सर एक भी कोई अल्फा और बीटा की ना कोई वैल्यू रख के देखें कि मतलब सैंपल वैल्यू ताकि एक्स आई के वापस तीन ही पॉइंट भी आए तीन आएंगे ना, ये 3 नंबर्स हैं, हाँ ये भी 3 नंबर्स हैं, बेसिस तीन नंबर 3 नंबर्स हैं, और ये बेसिस हैं जो ओरिजिनल एक्सिस में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो याद रखिए ये सर्कल सा पॉइंट है, गौर से देखिएगा। जब मैं कहता हूं कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं इतने यूनिट्स, तो मैं किस एक्सिस के आधार से ये डायरेक्शन डिफाइन करता हूं? ओरिजिनल एक्सिस के आधार से। जब ये मैं मूवमेंट कर रहा हूं आई एम इन द ओरिजिनल स्पेस। दोबारा से देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि B1 डायरेक्शन में अल्फा 1 स्टेप्स मूव करो, ये डायरेक्शन कौन से एक्सिस गवर्न कर रहे हैं? x1 x2 x3 ओरिजिनल जो एक्सिस है वो गवर्न कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में मूव करो, ये मूवमेंट जो है कंट्रोल्ड बाय व्हाट एक्सिस? द ओरिजिनल एक्सिस। सो व्हेन दिस मूवमेंट इज हैपनिंग आई एम मूविंग इन द ओरिजिनल स्पेस। अच्छा सर इस पर जो B2 है इनका जो तीसरा पैरामीटर होगा वो सेम ही होगा? नो नॉट एट ऑल सर क्योंकि ये एक प्लेन है और वो प्लेन इसमें है तो वो सेम होगा। नो सर एक मिनट यार, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equals to 0। ये प्लेन है, इसके कोई से 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, कोई से 2 पॉइंट्स, ये प्लेन है और ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, इसका कोई से 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। एक पॉइंट तो है 0 0 0, कोई एक और पॉइंट बता दे। 1 1 2 3 4। अब मैं बता ये कर सकता हूँ -1 2 -1। हाँ, अब 0 0 0 को देखें, -1 2 -1 को देखें, कोई और भी बना सकते हैं आप। They are not similar. They do not. All the points that satisfy this equation, they are on the plane, and they need not to have one coordinate fixed. सही है जी? Okay, I'm moving on. तो ये एक चीज नहीं समझे। Yes. अल्फा 1 और अल्फा 2 जो हमने निकाला है, हमने डॉट प्रोडक्ट लिए न्यू बेसिस के साथ B1 T B2 T। Yes. अब x साइड तो हमारा एक 3/1 का वेक्टर है। Yes. सो B1 और B2 क्या 3/1 का वेक्टर है? Yes. क्या 3 1 नहीं होगा, क्या पॉइंट है? B1 was specified using x1 x2 x3. B2 was specified using x1 x2 x3. Make sense? Yes, sir. Yes, no? Yes. So far so good? So we can project, we can reconstruct back. No problem. No problem at all. समझ आ रही? अब मसला ये है कि अगर तो हमें बेस्ट सम स्पेस की बेस्ट, याद रखें 3D के अंदर there are infinitely many 2D planes that are passing through origin. There are infinitely many 2D subspaces in 3D. yes. B1, B2 given means out of those infinite subspaces, we know which one to use. But the actual problem is find out that plane. B1, B2 is not given to you. Find out the best B1, B2 that represents the data with minimum error or actually no error. You always can reconstruct back. मेरी बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल डेटा एक प्लेन में लाई कर रहा होता और आप डेटा आप कोई और प्लेन की बेसिस यूज करके उस पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब ओरिजिनल डेटा और जिस प्लेन, फॉर एग्जाम्पल डेटा लाई ऑन दिस प्लेन, लेट्स से these are some points, let me draw the points, ठीक है? These are some points in the data, that's the plane, that's it. अगर ये नजर आ रहा है, सही है जी? Yes? And let's say this is the plane or this is the plane on which I just project. This is the plane मैं कहता हूँ ये best plane है, इस पे represent करो data. Yes? Then I will project these onto the orthogonal basis of these. So first basis is this one, second basis is this one. yes. So ये मैं represent करूँगा, फिर दूसरे पे represent करूँगा, points will be there. अब मैं इनको use करके, इनकी basis use करके reconstruct करता हूँ data. The reconstructed data will stay in the plane, in this plane. क्यों? क्योंकि मैं अल्फा 1 यूनिट चलूंगा B1 डायरेक्शन में और अल्फा 2 यूनिट चलूंगा B2 डायरेक्शन. I have to stay in this plane. So original points and the reconstructed points, they are very far away.
So याद रखें जब आपने projection करनी है, you have to find out the subspace which has lowest reconstruction error. So B1, B2 is not available, you have to find that out. And how many availabilities are there? Infinite. So they have to be first in that plane और फिर आप प्रोजेक्शन की बात करें. जब आपको B1, B2 मिल गए, then you can do projection reconstruction. Very good The बात. problem is if B1, B2 are good, you will be having a good projection. Yes. If B1, B2 are not good, you have to bad projection. You can do projection and reconstruction always. Yes, yes, yes. Whatever B1, B2 you come up with. The problem is common with B1, B2 that gives the reconstruction the best Yes. or represents the data best. रिकंस्ट्रक्शन आपने एरर का है, रिकंस्ट्रक्शन एरर जीरो तब भी होगा. Reconstruction means the following. Reconstruction means the following. This is the reconstruction point, and this was the original point. These two must be same. इनमें एरर आ सकता है. Error आएगा अगर आपने B1, B2 केयरलेसली चूज किया तो कोई और Yes. मतलब ऐसी अगर ऐसी सबस्पेस हो जो सारे पॉइंट्स को ही अपने अंदर हो, उसके अंदर आ रहे हो, Then zero. Then zero. अगर कोई पॉइंट बाहर रहेगा तो हम में उसको Then for that point there is an error. For that point there is an error. सही है जी? Yes. Make sense? So the idea is to come up with that one space. So here is the problem जो मैं अंग्रेजी में लिखने जा रहा हूँ. ठीक है? और अंग्रेजी means obviously the super English kind of stuff. काशी हो गए. Goal. I don't Find out minimum number of bases that keeps on J. Minimum number is J. That keeps a lot of information. सही है जी? Yes. अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस की जगह पे सिनोनिम यूज कर लूं और इसकी जगह पे लिखूं फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, and this would be more complete. Our goal is to find out as minimum number of bases as possible. क्योंकि जितनी bases ज़्यादा होंगे उतने नए coordinates ज़्यादा होंगे. We need the number of coordinates to be smaller, but we do not want to lose information. Yes, no. Make sense? So अभी हमें ये भी नहीं पता पॉइंट कौन से हैं और ये भी नहीं पता कितने हैं. बिल्कुल. ना हमें ये पता है कि जो नई bases हैं वो हैं कितनी और ना हमें ये पता है कि वो हैं कौन सी. सही है? अब जरा प्रॉब्लम की जो सीरियसनेस है उसको देखिएगा. In d-dimensional space, there are infinitely many d-1 dimensional subspaces, and there are infinitely many d-2 dimensional subspaces, and there are infinitely many d-3 dimensional subspaces. To the level there are infinitely many one-dimensional subspaces. We do not know the number of dimensions. Even if we know the number of dimensions are, let's say, 5, then there are infinitely many 5-dimensional subspaces. Which one? So we do not know the number of dimensions. Even if we know the number of dimensions, we do, for that number of dimensions, there are infinitely many choices. Which one to pick? That's the question. समझ आई? Yes, no. Yes. Example? आपका चावली का लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है? यही? I just want to finish this, so I request 5 more minutes. Yes. After 5 minutes. After 5 minutes. So total 10 minutes. 5 and 5. Okay, so that's not a request. For those who tend to miss
miss their point or bus, they can leave and they can see the video afterwards. But most of you, you should stay. I want to describe the whole matter. I want to finish this. Yes. Okay? For those who have to go at 4 p.m. for some stuff, they can leave and they should see the video afterwards. But I recommend to sit and see. Say it? Okay. Let's say you have two dimensions, x1 and x2. Okay? For a subspace, the basis vector must pass through origin. That's a precondition. Nonlinear is not going into it. Why is it the case? That is one of the axioms. Tell me a direction that represents the data best. एक लाइन आपने भी क्या चाहिए जो सबस्पेस है उसके लिए मैंडेटरी के वॉल्यूम से पास होती है यही का आपने Origin is the pass part of the subspace. बट सर ये मैंडेटरी तो नहीं होना चाहिए मैं इसके ऊपर तो सबस्पेस बता देता हूँ That is not a subspace. That is a subset of this. For a set of points to be called as a space, it must pass through 10 axioms. One of the axioms is it must has have to zero pass vector. it has to Zero vector. yes it has to Sorry. ये अगर बात कर सकते हैं ये स्पेस है स्पेस को ऊपर से स्टार्ट करते हैं Should the axioms make sense? That's the question. You set the axioms and then you develop the theory. And by the way, I should not go into the detail of that. There are axioms. I can prove easily that if zero vector is not there, then the closure under addition and closure under scalar multiplication will be violated. And that's a property of vector space. yes Vector space has a property that its points, they must be closed under addition, they must be closed under scalar multiplication. If zero vector is not a part of then one of these properties will be violated. And so zero vector must be there. Anyway, so the details, you can visit my office afterwards, you can see that. Anyways, okay. Let's say these are the data points, and tell me a direction. Obviously, the direction passing through origin. For now, I'm assuming that all the data points they are centered at origin. Let's say. Tell me a direction that best represents the data. बस यही लाइन है इसी को लाइन बना दे Okay, that direction. no ये डायगोनल वाली लाइन Sir, you need some points pass. कोई भी ये दो पॉइंट पकड़ने में तेरा लाइन चाहिए 45 लाइन I want you to discover a particular property of that line that best represents the data. First of all, notice if I represent this data by any other line than this line, then the variation of the data becomes squeezed. Notice this. oh projection Yes. If I do the projection in the direction other than this line, they are all then all these projections, they will be having, after projection, the projections will be having smaller variance. They will become compact. Yes? all of them This is the only direction in which if I project, they after projection, the variation will be high. Is that true? or remain constant Will be high with respect to other directions. okay So my goal, let me explain the goal. The goal is find out the direction in which if you project, the projected points have a lot of variation. Variation means variance. They are scattered a lot. Yes? You will see, visually you can see, this is only this direction. In any other direction, data will become compact. Yes. Or less, with less variance. Is that true? yes ये no projects के ऊपर इस डायरेक्शन में जरा करें और सामने प्रोजेक्ट this that yes that oh मैंने पॉइंट्स ज़्यादा बना ली now all these points इनका मीन निकालें इस लाइन को जितने पॉइंट्स हैं का मीन निकालें और यानी जितने भी अल्फाज आए एक्चुअली अल्फा लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा इन सारे अल्फाज का मीन निकालें और हर अल्फा को उसका मीन सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेके ऐड करना है दैट्स ओवरऑल वेरिएशन और ये बताता है कि डेटा आपस में स्कैटर्ड कितना है
अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगा तो ये नंबर ज़्यादा होगा और वैसे कम होगा। इसका जो टोटल स्कैटर है वो इसके टोटल स्कैटर से कम होगा। यस। और अगर आप कोई एक्सट्रीम केस में अगर आप ये लाइन ले आए, the scatter is exactly zero. Everything squeezed to a point. Which means if you use this direction for representation, you are not going to reconstruct anything. I mean, you have lost a lot of information. This is the variation in data that you have to keep. This is the variation in the data that has information. Make sense? So the idea is the following. Find out the bases that maximize the variance. Make sense? If you understand this, the math is just beautifully followed. If you convince on this point, that the basis that best represents the data has a property that if you project the data onto that direction, the projected points will be having a lot of variation. It keeps the maximum variation because it's the variation that has information. इसको मैं ऐसे explain करता हूँ आपको. Let's say you have a point. Let's say you have a plane और उसके ऊपर कुछ points हैं काफी सारे. Yes? And बिल्कुल ऐसे समझे सारे points एक plane के ऊपर हैं और कुछ points हैं plane से थोड़े से नीचे हैं और कुछ points हैं plane से थोड़े से ऊपर हैं. अब इसकी तीन direction हैं. एक direction ये है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है. अगर मैं आपसे कहूं कोई एक डायरेक्शन डिस्कार्ड कर दे, बट डू नॉट डिस्कार्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी डायरेक्शन डिस्कार्ड करेंगे आप? जिस डायरेक्शन में वेरिएशन सबसे कम है. मेक सेंस? व्हिच मींस यू हैव टू कीप द डायरेक्शंस हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन. सो दे यूज द डेटा. यस नो? इज दैट ओके? Okay, the rest of the theory is very straightforward. Erase कर दूँ इसको? Yes. Erase कर दूँ? Yes. पहले मैं अल्फा कह रहा था, अब मैं y I कह रहा हूँ. This is the coordinate of the projection of the ith point. पहले मैं इसको अल्फा ही कह रहा था. And I am using wxi. ठीक है, पहले मैं b यूज कर रहा हूँ, अब मैं w कर रहा हूँ. मैं assume ये कर रहा हूँ. I want to find out one dimensional subspace that best represents the data. Make sense? And then I will argue कि अच्छा two dimensional subspace find out करने का ये तरीका है, 3 dimensional. और हम ये भी देखेंगे the best number of dimensions कितनी होनी चाहिए और वो कौन सी होंगी. But I will start my algorithm. I will start my formulation the way I will find out one dimensional subspace that best represents the data. और उसका जो basis vector है वो W है. And this is direction vector, which means W transpose W equals to 1. This is a direction vector, its magnitude is 1. And I am sitting in D dimensions. This is D by 1, this is transpose, sorry. This is 1 by D and the result is 1 by 1 number. Make sense? Yes, no? Yes. This is what I want to do. For all the points, I need yi minus y mean to be maximum. I want this to be maximum. I want to find out W that maximizes the projected variance. Once I get the projections has a lot of variance. So the W that maximizes this is my W. Yes, no? Subject to the constraint that this must be a direction. वो ना हो कि आप W को 100 से मल्टीप्लाई करके कहीं देखें वेरिएंस कितना ज़्यादा आएगा. It must be a direction. It should not be scaled by a number. Make sense? yi क्या आ रहा है? W transpose xi. अगर वेरिएंस ज़्यादा नहीं आया तो W को 5000 से मल्टीप्लाई कर दें. अब कहीं हो वेरिएंस बहुत ज़्यादा. So it should be a direction. It should be a basis vector. Make sense? So its magnitude should be 1. Yes, no. Yes. बस प्रॉब्लम उसके बाद नहीं खड़ी है. W फाइंड करना है. दोबारा मैक्सिमम सही डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा. जी, ये आपका सवाल पिछले कई लेक्चर से चल रहा है. There should be a way. I will not see one by one. I will not see one by one. There will be a way. And let's see that way. कहीं भाई एक कमेंट कर सकता हूँ. Yes. लेट्स से अब पता नहीं मैं गलत भी कर सकता कि
लेट्स से कि अगर मैं थोड़ा सा सबसे बेसिक से शुरू करता हूँ कि अगर मुझे पता लग जाता है कि मेरे पॉइंट्स वन डायमेंशन में है, इफ आई चूज एनी 2 points Yes. it will create that one line. If the data has no noise, then yes. Yes. If the data has noise and you just picked a wrong point with another point, you have chosen very wrong. Yeah. But if you choose 3 points, No. Probability. Probability. yeah. The noise can be went down. All the points. Okay. Okay. So far so good. So this y bar can be written as 1 over n. I varies from 1 to n. Yi. Yes. This is y bar. The mean of the data, projected data. Is that true? Which means this y bar can be written as 1 over n. I varies from 1 to n. W transpose xi, because this is what the yi is. Yes? Which means this y bar can be written as W transpose 1 over n. I varies from 1 to n. Xi? Yes? This W does not depend upon I, it can go out. Which means this y bar is simply W transpose x bar. Yes. Mean. Yes? Make sense? Okay. Okay. I need just 10 more minutes, not more than that, so focus. I want to maximize this subject to this constraint. This is why this is why I go. And I want to find out that W that does this. So far so good? Erase W इसको? Yes. And this can be written as remember this is 1 by d and this is d by 1, this whole thing. So the number is 1 by 1 and I am taking it square. It's a real number, I am taking it square. Yes? Make sense? अगर आपके पास एक नंबर of a square आप उसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं. If a is a number, the number a square, a multiplied by a, that will not follow it dot. Yes? So ये जरा गौर से देखिएगा, ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर लिया गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. W transpose xi minus x bar, that's a number. इसी का स्क्वायर है ना? ये आप तो देखिएगा कि मैं बिल्कुल सेम नंबर लिखने लगा हूँ. A dot B is equal to B. So that's a square. This is exactly the square. So far so good? Yes. Yes, no? Yes. And then I have this summation I varies from 1 to n, and I want to maximize this. So far so good? I can take this W out because it does not depend upon I. Okay. So I want to maximize this, and I want to find out such a W. So far so good? Yes. This matrix can be complete. By the way, this is d by 1 and this is 1 by d. So this whole thing is d by d matrix. Yes? But then this thing is 1 by d and this thing is d by 1 and the total result is again a real number which is One is not one. variance. Make sense? Okay. This matrix can be completely computed through the data. अब डेटा लाएं, हर एक डेटा का मीन कंप्यूट करें, हर पॉइंट में से मीन सब्ट्रैक्ट करें, इसका आउटपुट प्रोडक्ट लेते हैं, ऐड करते हैं, एंड अप विद डी बाय डी मैट्रिक्स. ये आप डेटा से कंप्यूट कर सकते हैं.
Yes? I'm calling this matrix as S. So maximize this subject to the constraint W transpose W1 minus that is equal to 0. Maximize this subject to this constraint. Yes. And this matrix is S, which you can compute through data, from data. आपको data ही होना है ना? Data से ये matrix निकाल सकते हैं? बिल्कुल। Then you have to solve this problem, and then the W will be found. Without going into details and proofs, this is a convex optimization problem, but this is a constraint convex optimization problem. So when I have a constraint optimization problem, what should I do? Lagrangian dual. Yes? Okay. So here is the Lagrangian function. W transpose X, W plus alpha is a lambda carrying to be Lagrange multiplied by lambda 1 minus W transpose W. What is the next step? We differentiate this with respect to W and put it equal to 0. Yes? So differentiate this with respect to W and put it equal to 0. Derivative of this is SW plus derivative of this is minus lambda W. Then put it equal to 0. Yes? Yes. Surpass. That means SW is equal to lambda W. Make sense? Yes? अच्छा ये प्रॉब्लम जिंदगी में पहले कभी देखी है आपने? हाँ अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए A तो आपसे कहा जाए ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो वो अपने का स्केल वेक्टर हो. This vector is called eigenvector of A. Yes, sir. So the W that maximizes this, the variance, is actually eigenvector of this matrix. ये मैट्रिक्स आप कंप्लीटली डेटा से निकाल सकते हैं. सो आपको पास डेटा मैट्रिक्स निकालना है. उसके बाद क्या करें? अगर मैटलैब है तो i का फंक्शन कॉल करें, आपको सारे eigenvector मिल जाएंगे. Yes? लेकिन अभी एक चीज बाकी है. You will be having several eigenvectors corresponding several eigenvalues. Which vector to choose? मेरी बात समझ में आ गई? हमने वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना था. याद करें this is the variance. This is the variance. So we will be having a lot of eigenvalues and corresponding vectors. So lambda 1, W1, that's one eigenvector and a corresponding eigenvalue. Lambda 2, W2 and so on. Actually in this particular case we will be having D eigenvalues, D eigenvector because the matrix is D by D. Make sense? Yes. So we will be having D vectors and their corresponding eigenvalues. Which vector to choose for projection? इसका effect सबसे ज़्यादा होगा, सबसे थोड़ा होगा. Why? उनके magnitude उसका ज़्यादा है तो उसकी वजह से value ज़्यादा होगी. Vector का magnitude 1 है. It's a direction vector. नहीं वो eigenvalue थोड़ा better है. So eigenvalue represents what? That's the question. So variance कितनी है? इसको भी करिए. So I'm going to show that actually eigenvalue actually represents the variance. So make sense? So you have a lot of eigenvalues and eigenvector pairs. Now, which eigenvector to choose? Remember the eigenvector, the vector that maximizes the variance. Yes, no? ये तो पता चल गया कि वो जो भी डायरेक्शन है वो S की eigenvector है. और S के eigenvectors आप निकाल सकते हैं. I mean, there are ways to find out eigenvectors of a matrix. W is equal to lambda W. Yes. अगर मैं दोनों तरफ पे W ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं, this lambda is scalar. Yes. This is 1. ये क्या है? Variance. Variance. समझ आ रही है? Eigenvalue is the variance in the projected data.
अब मैं कौन सा आइगन वेक्टर पिक करूँ जिसकी आइगन वैल्यू मैक्सिमम हो? क्यों? क्योंकि फिर वेरिएंस मैक्सिमम होगा। विवाद में आई? आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस. There are a lot of eigenvalues. Which eigenvalue to pick? So that is the highest, because that eigenvalue represents the variance. So the algorithm is the following: make this matrix S, compute its eigenvalues and vectors, pick the top eigenvalue in descending order, and corresponding to that eigenvalue, whatever the vector is, that is the one-dimensional subspace in which your projection is the best. सही है जी? यस. क्वेश्चन, क्या इस केस के अंदर मैं टॉप की दो आइगन उठाऊं और दो वेक्टर्स लेके बोल दूं मैं ये वाला मेरा जो सबस्पेस बन रही है ये वाली दो बेसिस के साथ बेस्ट है? So let me extend this to multi-dimensional. अभी मैं एक डायमेंशन ले रहा हूँ. I'm going to extend this कि अगर आपने 2-3 dimensions उठानी हो और फिर what is the best number k, कितनी dimension choose करनी चाहिए? Make sense? So far, so good? Yes. See, there only. I still have 3 minutes. That's more than sufficient. What if your y1i is w1 transpose xi and your y2i is w2 transpose xi and you have a lot of these? So you have a lot of bases, okay? And let me call this yi as y1i, y2i, and yki. Do not know what number k is the best. Make sense? If this, then you can easily show, I mean, without proof, and you can easily show that if you have this multi-dimensional case, then the formulation goes like the following. We want to maximize W1 transpose SW1 plus W2 transpose SW2 plus so on, WK transpose SWK, subject to the following constraints. 1 minus W1 transpose W1 equals to 0, 1 minus W2 transpose W2 equals to 0, and so on. This is the formulation that comes if we want to choose more than one dimension simultaneously. Clear? इसका अगर आप Lagrangian बनाए ना, तो इसके साथ lambda 1 आ जाएगा, इसके साथ lambda 2 आ जाएगा और ये सारी ऐड हो जाएगी. अब अगर आप W1 के लिहाज से डेरिवेटिव लें, you will be having this condition. बाकी सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे. जब आप W2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, you will be having this condition. It means if you want to select more than one vectors, all of them are eigenvectors of S. Make sense? Now which, let's say 4 vectors to select. The 4 vectors that has highest eigenvalues, because if you add those eigenvalues, you get the total variance. Yes? Yes. No? Yes. So for example, if मैं एक eigenvector select कर रहा हूँ, select the one with the highest eigenvalue. Let's say I've selected this one. अब दूसरा कौन सा हो? वो दो जो मिल के वेरिएंस को मैक्सिमाइज करें. तो दोनों कौन से होंगे? eigenvalue 1, eigenvalue 2. Yes? So pick the 2 vectors with the highest 2 eigenvalues. Then pick the 3 with the highest 3 eigenvalues and so on. So algorithm is the following. और इन सब में मैट्रिक्स एक ही है, S फर्क नहीं है. Compute S, compute all the eigenvalues and vectors, sort in descending order the eigenvalues and vectors, then pick the top k. अच्छा. Make sense? Yes, no? Clear it? Last comment. Very last comment. What if I want 100% representation? Then pick all the eigenvalues that are non-zero. Yes? Then you'll be having 100% representation. If you want, let's say 99% representation and you bear 1% loss of information, then choose the total number of eigenvalues in order, maximum, then second maximum, third maximum. उतनी चूज करें कि जिनका सम टोटल सम का 99%. आपके पास जो टोटल सम है, that is total variance.
आप उनमें से कितनी उठाएंगे वेरिएंस का 99% आप कीप कर रहे हैं। लेट्स से आप 95% करना चाहते हैं। अब सवाल ये है 99% 95% करना क्यों चाहेंगे? कई दफ़ा ये जो डेटा होता है उसमें नॉइज़ होती है, थोड़ी बहुत नॉइज़ होती है, और ये जब 99% वेरिएंस आप कीप करते हैं, 98% वेरिएंस कीप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप लूज कर रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली द नॉइज़ जो सप्रेस हो जाती है। Because the noise is random, it is making a little variation in some direction, and you choose that. Make sense? So that's it about PCA. ये जो W's हैं, they are called principal components. क्योंकि ये आइगन वेक्टर्स हैं, अगर फेस डेटा पे अप्लाई करें तो that is called आइगन फेस। सही है जी? बहुत शुक्रिया। थैंक यू।